अभी हम लोग इंटरवल्स को डिफाइन कर लेते हैं, जो कि रियल नंबर्स में या रियल नंबर लाइन के ऊपर जो इंटरवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइए जरा डिफाइन कर लेते हैं। इसमें दो तरीके के इंटरवल्स होते हैं, तो क्लोज इंटरवल है ना, क्लोज्ड बोलते हैं, या फिर ओपन इंटरवल होते हैं, है ना। तो होता क्या है कि अगर मान लो कि ये तुम्हारे पास कोई रियल लाइन है, सपोज दैट ये ये मान लो कि हमारे पास लाइन है, ठीक। तो इस रियल नंबर्स लाइन के ऊपर हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, मान लो कि ए से बी तक का हमने लिया। तो ये जो पूरा कलेक्शन होगा इन सारे रियल नंबर्स का, उसे हम इंटरवल बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरवल। तो अगर हम ए और बी को इंक्लूड कर लेते हैं तो उसे हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। और अगर हम ए और बी को नहीं लेते, इनके बीच के सारे रियल नंबर्स को लेते हैं, तो उसे ओपन इंटरवल बोलते हैं। तो आइए इसको थोड़ा फॉर्मल तरीके से डिफाइन कर लें, आप लोग भी लिख लीजिए ताकि चीजें आपके पास रहे नोट्स में भी, और जब आपको पढ़ना हो समझना हो तो आप समझ सकेंगे। ओके, तो डिफाइन लिखिए, definition. What is the definition? The interval. Interval क्या होता है? ओके, तो अगर हम दो रियल नंबर्स ले लेते हैं, कोई भी रियल नंबर लेते हैं, लेट दिस ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स विद विद ए इज लेस देन बी, ठीक है। तो लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स विद ए इज लेस देन बी, है ना। ए जो है वो बी से छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हम बात करेंगे इंटरवल्स को। तो पहली जो चीज है वो क्लोज इंटरवल की अगर बात करेंगे, कि जो कलेक्शन होगा रियल नंबर्स का, जो ए और बी के बीच में है और साथ में ए और बी को भी ले लिया जा रहा है, तो उसे हम क्लोज इंटरवल बोलेंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, द सेट द सेट जिसमें हमारे पास वो सारी रियल नंबर थे, एक्स इज बिलोंग्स टू आर, x x belongs to R, and x is less or equal to b and greater or equal to a। It means कि x a और b को लेते हुए कि सारे बीच की वैल्यूज को इंक्लूड करता है, is called is called a closed interval, called a closed interval, okay, and is denoted by and is denoted by we can denote it by this, okay, and a and b are called endpoints। a और b हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। ठीक है, और अगर हम बात करें ए की, तो कोई ए छोटा है बी से, ए इज लेस देन बी, तो ए को हम क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे कि ए इज द लेफ्ट इन द पॉइंट, ए इज कॉल्ड द लेफ्ट इन पॉइंट, वाई बी इज कॉल्ड द राइट इन पॉइंट, thus
in a closed interval in a closed interval, both the endpoints belong to the interval। तो ये जो इंटरवल डिफाइंड है, ठीक है, यू कैन से कि जो क्लोज इंटरवल हमारे पास ए कमा बी डिफाइन है, इट मीन्स दैट ऑल सच रियल नंबर विच इज लाइज बिटवीन ए एंड बी, और साथ में ए और बी उसके अंदर भी है, वेर एक्स इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो इसको रियल लाइन पे भी अगर हम देखना चाहेंगे तो ये मान लीजिए कि हमने ये रियल लाइन, दिस इज रियल लाइन, तो यहाँ पर अगर हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, और यू नो दैट ए इज लेस देन बी, एज लेस देन बी, तो ए और बी को से लगाकर बी तक की सारी रियल नंबर्स हमारे पास इस इंटरवल के अंदर आती है। तो दिस इज द क्लोज्ड इंटरवल। ओके, सिमिलरली हम डिफाइन करते हैं, अगर ए और बी को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, हम नहीं लेते हैं, तो उसको हम ओपन इंटरवल बोलते हैं। then just write here the set which is defined like this: x such that x is belongs to set of real numbers and x is lies between b and a, okay, it's called an open set, it's called an open interval, it's called an open interval, and is denoted by, and is denoted by a comma b, and in an open in an open interval the end points not considered या फिर नहीं लिए जाते हैं, in the open interval the end points do not belong belong to the interval। जो इंड पॉइंट से बिलोंग नहीं करते, यू कैन से कि जो ओपन इंटरवल है इसको नोटेशन ऐसा, अच्छा समटाइम्स ऐसे भी लिखा जाता है, जो ए कमा पी, और ये ऐसे भी नोटेशन चलता है, तो उसको भी आप ध्यान रखें कि हमारे पास ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो सारी रियल नंबर जो ए और बी के बीच में, बट जो है तुम्हारे पास वो रियल नंबर्स हम नहीं ले रहे हैं जो ए और बी, इसका मतलब ये हमारे पास है, ठीक, ए और बी को एक्सक्लूड करके उसके बीच की सारी रियल नंबर्स को ओपन इंटरवल के अंदर रखा जाता है, तो इसको open। अच्छा, इसके बाद क्या है, एक तरफ से अगर ओपन है और एक तरफ से क्लोज्ड है, मतलब एक तरफ वाली जो इंड पॉइंट है उसे तो इंक्लूड कर लिया गया, एक तरफ वाली को नहीं किया गया, तो उसको हम सेमी सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड बोलते हैं। तो यू कैन राइट अ रिमार्क है, द इंटरवल the interval which is open, which is open which open from from one side and closed from another side, from another side, is called semi open, सेमी ओपन, या फिर सेमी क्लोज बोल दो, और सेमी क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो दिस इज योर ए कमा बी इज क्लोज इंटरवल, और दिस इज योर क्लोज इंटरवल ए कमा, ओके, तो यहाँ पर हम बी में क्लोज है और यहाँ पर ए में क्लोज है, और बाकी
अगर ओपन वाला लगा हुआ है तो इसका मतलब ए को नहीं दिया गया है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास इंटरवल की बात होगी, ओपन क्लोज एंड सेमी इंटरवल। और हम देख रहे हैं कि हम जो दो रियल नंबर लिए और उन दो रियल नंबर्स के बीच की जितनी भी सारी रियल नंबर्स है उनका कलेक्शन एक इंटरवल कहलाता है। ओके, तो अब हम बात क्या करेंगे, दैट इज योर लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है, कि हमारे पास जो इंड पॉइंट्स होते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ द इंटरवल। इसको भी लिख लेते हैं फॉर्मली। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ एन इंटरवल, length of an interval for for each interval with the endpoint with endpoints a and b, where a is less than b। ठीक है, ये हमें पता है, ये a is less than b। तो जो b माइनस ए डिफरेंस आएगा, दिस इज b माइनस ए, इज called the length of the interval, length of the interval है ना। तो p माइनस ए इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो यू कैन से कि कोई भी अगर हमारे पास जो इंड पॉइंट्स हैं अगर वो फाइनाइट हैं या कोई नंबर है, तो हमारे पास जो इंटरवल का लेंथ है वो एक फाइनाइट लेंथ आएगा। तो यू कैन से हियर क्लियरली क्लियरली of the intervals each of the intervals a comma b and a comma ओपन इंटरवल a comma b, या फिर हमने सेमी ओपन क्लोज ले लिए। ठीक है, सेमी सेमी क्लोज ले लिया और सेमी ओपन ले लिया। ओके, हैज सेम लेंथ। क्योंकि हर एक उसमें जो इंड पॉइंट्स हैं वो ए और बी हैं, तो उनका डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, बी में। तो इसका मतलब है ओपन इंटरवल का लेंथ और क्लोज इंटरवल का लेंथ सेम ही रहेगा, क्योंकि हम जो डिफरेंस ले रहे हैं उनके इंड पॉइंट्स का ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज को आपको समझना है। अब अगर हम किसी इंटरवल को फाइनाइट या इनफाइनाइट कर रहे हैं तो उसके लेंथ के अकॉर्डिंग हम फाइनाइट और इनफाइनाइट कहेंगे। एक और चीज डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू डेफिनेशन क्या है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, finite and infinite intervals, finite and infinite intervals. So an interval is said to be finite or infinite according as its length is finite or infinite. Thus, the intervals, thus the intervals, that is your closed interval a comma b, and this open interval a comma b. This is your semi-closed and open interval, and this is your a comma b.
हेलो। ओके, दिस इज योर वी आर फाइनाइट इंटरवल, क्योंकि इनका लेंथ फाइनाइट होगा। आर फाइनाइट because b minus a is finite। ओके, और अगर हमारे पास इंटरवल्स की हम बात करें, जो कि जिसमें इन्फिनिटी इंक्लूड हो, द इन्फिनिटी द इंटरवल्स, दिस इज योर a comma infinity, and this is a comma infinity। तो एक चीज ध्यान रखना, इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन लगाना है, क्योंकि यू डोंट नो इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी को आपको नहीं पता तो आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। इसलिए जब भी इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे इनफाइनाइट इंटरवल थे। क्यों? क्योंकि इनका जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है ना, तो लेंथ के ऊपर हमारे पास तो और जो सेट ऑफ रियल नंबर है, दैट इज जो होल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटरवल ही है, उस प्रकार से। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट।